Yeah, hi Swati. Are you able to hear me? Just a moment. Yeah, you are audible. Okay. Are you able to hear me properly? Yes, yes. एकदम Eh, proper. Great. So, guys, we are back with another video, and today we are going to have a discussion on, as you can see, her pet. So, today we are going to have a discussion on how to create a bond with pets. And ये सेशन का रीजन ये है गाइस कि आजकल देखा गया है कि लोग पेट्स को ले लेते हैं, उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, बट उनको नहीं पता कि पेट्स को नर्चर कैसे करना है. Like they think that if we are not having a child or if we are feeling loneliness, then we should adopt these pets. But let me remind you guys that these pets are also having some emotions. And even though if they can't speak, but they have the ability to sense and to feel. So I think we should be mindful about their emotions. And कोविड के बाद ऐसा हुआ है कि जब पहला लॉकडाउन था, फिर जब दूसरा लॉकडाउन आया, तो जब तक वो चीजें थी तब तक लोगों ने पेट्स रखे, उनको अडॉप्ट कर लिया. और जैसे ही ये सब खत्म हुआ, रेस्ट्रिक्शंस ईज हुए, पीपल स्टार्टेड अबेंडनिंग देम टू स्ट्रीट्स. उससे हुआ ये कि उनके खाने पे क्वेश्चन मार्क आ गया, उनके रहने पे, उनके सैनिटेशन पे, उनके हाइजीन पे. So I am having Swati, who is a pet communicator for almost 2 years, and she is having an diversified experience of more than a decade, which includes her soft skills experience as well as the experience of animal communicator. So Swati, before we kickstart this theme, can I have your brief introduction to all the viewers out there? Yes, absolutely. Thank you very much, Yash. First of all, thank you very much for having me here Thank you. and for hosting this amazing session because I Thank think you. it's absolutely required and it's the need of the hour Right. for every pet parent out there to understand, these small little details about their pets and about how to create a bond. Right. So I think hats off to you for this Thank amazing you. initiative. Thank you. And about Yeah. me, so you've already said it all, but so yeah, I mean, I have been into training. So I'm a soft skills Yes. trainer, image consultant, coach. But apart from that, I've Yeah. also been a pet parent for Yeah. almost 2.5 years. Right. And I am an animal communicator, I'm an Mhm. animal Reiki healer, Mhm. I'm a feeder, dog feeder, Right. and I'm also a rescuer. Mhm. So, yes, I'm extremely passionate about animals. Yes. That's about myself. ग्रेट ग्रेट. सो जब आप अपना पेट दिखा रहे थे, सो मुझे बहुत मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था. बिकॉज सी आई लव द क्यूटनेस जो वो दिखाते हैं. हालांकि आई एम नॉट अ पेट पेरेंट, लाइक बिकॉज माई मदर इज स्केर्ड ऑफ पेट्स. सो मतलब ये कंस्ट्रेन है थोड़ा सा. बट आई ऑलवेज अडोर देयर फीलिंग्स, लाइक, एंड आई ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट. सो Yes, स्वाति, मेरा सबसे इनिशियल क्वेश्चन ये होगा आपसे कि पेट को लाते वक्त हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एज यू बीइंग अ पेट पेरेंट, कि लोगों को लगता है कि बस खाना खिला दिया, पेडिग्री खिला दिया या फिर उसको वॉक पे ले गए तो हो गया. सो कैन यू गाइड आवर व्यूअर्स this basic question that what aspects they should consider before adopting a pet? absolutely, absolutely. Thank you for the question, Yash. Yeah. So, when people get a pet home, whether it's a dog or a cat, but mainly let's focus on dogs more because they Right. need more care than cats, but even cats need a lot of care, Right. no doubt in that. बट देन जब लोग किसी भी डॉग को घर लाते हैं एंड जब वो एक Right. छोटा सा पपी देखते हैं तो उनको बहुत क्यूट लगता है और वो Yes. बोलते हैं वाओ ये कितना क्यूट है, चलो इसे घर पे लेके जाते हैं, लेट्स Right. टेक हिम होम एंड वाओ ये तो हम इसको कडल करके सोएंगे, इसको हम यहाँ पे सोफे पे बिठाते हैं, इसके बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करेंगे और इंस्टाग्राम पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे और मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे. सो Right. एंड दे ऑल्सो हैव पॉजिटिव फीलिंग्स ऑफ कोर्स एंड दे फील लाइक ओके मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होगी जब मैं घर आऊंगी तो मेरा पेट मुझे देख के कितना खुश होगा एंड दैट विल Right. गिव मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि एक पेट को घर पे लाना इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट्स लाइक Right. अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, Yes. जो कि एक इट्स लाइक हैविंग अ बेबी एट होम. Right. जब आपका एक बेबी होता है घर पे, आपकी जितनी जिम्मेदारियां एक बेबी की तरफ होती है, एग्जैक्टली द सिमिलर और आई Right. वुड से एग्जैक्टली द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टुवर्ड्स अ पेट, Right. राइट? तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक पेट को बहुत क्यूट है सोनू बेबी घर पे Yes. लाए
बट जब उसने right, सुसु पॉटी करना स्टार्ट करा एंड देन यू स्टार्ट यू नो हैविंग दीज फीलिंग्स ऑफ अरे यार छी ये पॉटी कर रहा है, छी ये सुसु कर रहा है, ये मेरे घर को गंदा कर रहा है। और फिर right, आपने क्या करा, आपने या तो उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर right, दिया, या तो आप उसको अबैंडन कर देते हैं, या तो right, आप उसको अडॉप्शन के लिए कहीं और दे देते हैं, right, right? So I think it is very, very important for people to understand that having a pet at home, it's a huge responsibility, right, as good as a having a responsibility of a small kid, of a small baby. right, इनफैक्ट पेट्स को तो ज्यादा जरूरत है हमारी, क्योंकि वो तो बोल भी नहीं सकते, right, राइट? बोल सकते हैं बिकॉज आई एम अ कम्युनिकेटर, बट right, सारे लोग समझ नहीं सकते, राइट? right, सो इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप जब पेट को right, घर पे लाएं, तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी बहुत जरूरी है कि वो क्यूट तो दिखते हैं, बहुत स्वीट होते हैं, डेफिनेटली बहुत सारा प्यार भी देते हैं, लेकिन right, उसके अलावा आपको भी उनके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। सिर्फ आप उनको सोफा पे बिठा के, बेड पे बिठा के, बहुत सारे लोग तो सोफा और बेड पे भी चढ़ने नहीं देते हैं, बिकॉज अच्छा, उन्हें लगता है ओ माय गॉड माय सोफा इज एक्सपेंसिव, माय बेड इज एक्सपेंसिव। नो नो नो, उन्हें मैं एक डॉग बेड पे ही रखूंगी। तो अगर आपके मन में ये सारी चीजें हैं, अगर आप इतना डिफरेंशिएट करते हैं एक डॉग को घर पे लाने से पहले, सो आई वुड फील दैट इट्स बेटर यू डोंट गेट अ डॉग होम। इट्स right, बेटर कि लेट इट हिम बी, और उसको एक बेटर घर अगर मिले तो आई थिंक वो बेटर रहेगा, इंस्टेड ऑफ right, यू गेटिंग अ डॉग एट होम right, and putting a lot of restrictions on the dog and okay, ignoring your dog. yes. So you have very rightly said that actually मेरा एक डिस्कशन हो रहा था पेट फूड के फाउंडर से जिनकी कंपनी है, उन्होंने ही मेरे को ये शॉकिंग फैक्ट बताया कि लॉकडाउन के वक्त तो बहुत सारे लोगों ने पेट्स को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन जब लॉकडाउन खत्म हुआ और क्योंकि फिर रेस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हुए तो बहुत सारे लोगों के जो लव्ड वंस है या फ्रेंड्स है या एक्विंटेंसेस है वो आ रहे थे, तो उन्होंने पेट्स को स्ट्रीट पे छोड़ना चालू कर दिया। ये मुंबई में आपने भी बोला बहुत ज्यादा देखा गया कि बहुत सारे अलग अलग हाई ब्रीड के डॉग्स देखने मिल रहे थे रोड पे ऐसे ही। सो कैन यू गाइड कि अगर एक पेट हम लाते हैं तो हमें कौन सी चीजें हमें उस पर ध्यान देना पड़ता है, जैसे हम एक बच्चे की सुसु पॉटी पढ़ने पे ध्यान देते हैं, उसके करियर पे ध्यान देते हैं, एक पेट का क्या करियर होता है, या एक पेट को हमको हमको हमारा क्या गोल होना चाहिए एक पेट को लाने से? Right. So yes, yes. Actually, unfortunately, COVID के टाइम पे ये चीज हुई थी, और ये मैंने खुद राइट, देखी है ऑन द रोड, ओके, जहाँ पे कोविड में लोग इतने पैरानॉइड हो गए और इतना पैनिक आ गया था हम्म, कि लोग ये भूल गए थे कि अरे आप थोड़ा रिसर्च करो, आप डॉक्टर से बात करो, आप वेट से राइट, बात करो, बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग दे एवरीबडी वाज अंडर अ मिथ कि राइट, यार हमें डॉग से ना आ जाए ये वायरस, हमें मेरे कैट से ना आ जाए। सो राइट, पीपल एक्चुअली स्टार्टेड अबैंडनिंग द पेट्स। ये तो एक्चुअली न्यूज में भी आया था राइट, that so many people started abandoning the pets irrespective of the breed, of course. They राइट, started abandoning and leaving their pets on the road. Forget about keeping them in the shelter. वो राइट, रोड पे छोड़ दिया उनको। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड जिन्होंने लिटरली रोड पे देखे हैं बहुत सारे हस्की, लैब्राडोर, पोमेरियन घूमते हुए अलग अलग एरियाज में, ये कोविड राइट, के इमीडिएट इफेक्ट के बाद। हम्म, And we were beyond shocked to see that how a person or how people can be so illiterate राइट, and so immature to understand the fact कि यार वो, अगर आपका कोई राइट, फैमिली मेंबर है, सपोज आपके पास कोई फैमिली, आपके फैमिली मेंबर बीमार हो गए, तो क्या आप उन्हें सड़क पे छोड़ देंगे? यू वुडंट अबैंडन देम, राइट? यू राइट, वुडंट लीव देम ऑन द रोड। सो हाउ कैन यू, और आपको तो डॉग से आ भी नहीं रहा है कोविड, वो तो एक वैसे भी राइट, मिथ है। So राइट, how can you even think about abandoning your own child, your own family member? You know. राइट, So that's what happened. That was very disturbing for, I think, the entire, um, I would say, community of people who really love animals. So राइट, हमारे लिए बहुत ज़्यादा disheartening था ये देखना. राइट, So and so that was that. Yeah. And what was your second question, Yash? I या think I missed. सो माय सेकंड क्वेश्चन वाज कि एक पेट को जब हम लाते हैं तो कैन यू गाइड अस कि वो कौन सी जिम्मेदारियां है जिसके लिए हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए? बिकॉज आपने ये बहुत सही बोला कि ऐसा नहीं है कि उसके साथ 5-10 फोटो खिंचवा लिए, उसके बाद जब वो सूसू पॉटी कर रहा है तो आप बोलो कि यार मेरा घर गंदा हो रहा है, या फिर अगर ये बेड पे चढ़ेगा Correct. तो इसके गंदे पैर, वो एक सोच होती है, Yeah. उससे आप वो पेट से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। Absolutely. Absolutely correct. राइट, यस यस। सो बेसिकली सो मैं एक ही सजेशन दूंगी, अगर कोई भी, सी आई डोंट
hate people who don't like pets. I respect everybody, okay? right, ठीक है, right, सबके अपने अपने लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स हैं, सबके अपने प्रायोरिटीज हैं, सबके right, अपना तरीका है, एंड इट इज कम्प्लीटली ओके। right, अगर आप उनमें से एक हो जो आप अपने सोफा या बेड पे या कुछ चीजों का मतलब यहाँ पे मेरा पेट नहीं आ सकता, वहां पे नहीं आ सकता, ये right, रिस्ट्रिक्टेड, वो अगर आप उनमें से एक हो, आई थिंक इट्स बेटर इफ यू डोंट गेट अ पेट। लेकिन okay, आप उनको घर पे लाके भी अगर एक जेल वाले या प्रिजन वाले एनवायरमेंट पे रख रहे हैं, right, if you want to keep them in a prison, एक तो घर, see, we have to understand that right, pets or all animals are wild animals. They are wild by nature. right, Okay, we humans actually domesticate them. हम उन्हें वैसे भी घर पे रख के डोमेस्टिकेट करते हैं, which is mm, ideally not correct. okay, Okay, क्योंकि एनिमल्स को आइडियली बाहर की दुनिया में ही रहना चाहिए, because they are wild, they are right, forest, I mean they are related to forest right, and nature and they are more mm-hmm, happy there. right, बट प्रॉब्लम क्या हुई है, बिकॉज इट्स अ ह्यूमंस वर्ल्ड नाउ, और हम ह्यूमंस ने सारा नेचर और सारे जंगल्स और सब कुछ ऑलरेडी खत्म करके बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना लिए हैं। right, सो नाउ व्हाट इज स्टार्टेड हैपनिंग इज नेचर इज वेरी वेरी मिनिमम नाउ, और हम okay, एनिमल्स भी mm-hmm, फॉरेस्ट में चले गए हैं, जो फॉरेस्ट भी बहुत कम बचा है, right, फॉरेस्ट बहुत कम बचे हैं, हर yes, जगह वी सी ओनली बिल्डिंग्स एंड बिल्डिंग्स, buildings, ऑलराइट? right, So now what we are doing is we are getting animals at home and we are domesticating them, which is a right, little unnatural to the animal, because animal right, सोचता है कि यार मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर घूमना है, और वैसे भी mm, तुमने मुझे घर पे बंद करके रखा है। और उसके बाद में आप घर right, पे लाने के बाद भी you put hundreds of restrictions on your pet, right, telling him no for everything. नहीं right, यहाँ नहीं बैठना, नहीं वहां नहीं जाना, नहीं ये मत करो, नहीं वो मत, you keep telling no to your pet, then why have you got that pet home, right? So you have right, to understand that pets have a lot of needs apart from mm-hmm, only food. Okay, food, yes, लोगों को लगता है कि सिर्फ खाना दे दिया yes, और उनकी नीड्स कंप्लीट हो गई, mm-hmm, but I would say there is a lot of needs, and I want people who are watching this to please make a note of these needs if you still right, don't know. If you are a pet parent or if you are going to be a pet parent, I right, would really want you guys to take a note of these things, which is okay, because जब मैं नई नई pet parent बनी थी, even I mm-hmm, had no idea. मैंने okay, भी अपने experience से सीखा है, right? right, So so I want to make people aware that there are social needs of a okay, pet. mm, Now what does social need mean is your dog has to be socialized with other dogs. okay, He has to be, mm-hmm, all right? Let him make friends, let him sniff the butts of other dogs. mm-hmm, Whenever your dog is sniffing another dog, do not pull him away, right, do not stop him. People find very embarrassing, मैंने बहुत सारे पेट पेरेंट्स को देखा है, जब उनका डॉग दूसरे के बट को स्निफ करता है, दूसरे के डॉग के बट को स्निफ कर रहा है, they try to pull the dog away. नहीं नहीं, छीछी है, गंदा, it's dirty. mm, We have to understand that's how they introduce each other, by sniffing right, the butts. you know okay, we have to understand the language of dogs, the world of animals. right, So let them sniff around, let them smell whatever they want to sniff and smell, क्योंकि वो humans नहीं है यार, मतलब right, we have our needs, they have different needs, and that's how right, they talk to each other. right, Sniffing the butt of another dog means saying hi, or okay, they are introducing each other, themselves okay, to each other. right, So let them do that, let them be. Now, socialize क्यों कराने देना चाहिए? क्योंकि see, guys, we have to understand कि dog right, चार दीवारी में रहता है. They stay inside this small houses, especially बॉम्बे में तो बहुत छोटे छोटे घर हैं. right, और बॉम्बे में तो लोग बड़े बड़े ब्रीड से आते हैं, छोटे घरों के अंदर रखते हैं. So right, that's another topic. yes, But वैसे भी यहाँ पे बहुत छोटे घर हैं, और यहाँ पे we want the dog to sit at home whole day. Imagine we have a phone, we have TV, we have Netflix, we have right, books to read. हमारे entertainment के लिए there are thousands of things. But right, what about a pet? They yes, don't have any entertainment. हमारे अलावा उनका कोई नहीं है, yes, right? They look up to us for every small thing. They right, are completely dependent on us. right, So whenever we have to take out time for them, and we have to take them for walks, we have to take them for probably either if you have dogs in your own area, in your own society, let them socialize there. If you don't have a lot of dogs, then there are a lot of social events जो बहुत सारे लोग करते हैं. Dog social events भी होते हैं, right, जहाँ पे आप अपने dogs को लेके जा सकते हैं, आप उनको socialize करा सकते हैं, right, right? So उनके social needs हैं, बहुत important है. Please let them socialize, guys. right, And
let them socialize with street dogs also. Yes. All right. Now that's another perspective that people have. Oh no, 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 my dog, my pet, my dear pet cannot socialize with other strays because why? Strays are dirty, strays have Dirty. ticks, strays have infections. So see, I completely understand some Right. because they are on roads, so they have certain kind of, they might have some infections, they might have some ticks or fleas जो होता है normally dogs में. Right. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर स्ट्रे से उनको दूर रखोगे, आप खींचते जाओगे. माई डॉग Right. क्लमजी socializes with everybody. Right. Okay, with everybody, whether it's a pedigree breed or Mm-hmm. whether it's a stray, it Okay. doesn't matter because a Mm-hmm. dog is a dog, Right. right? So I let him be, I don't even keep him on leash. मैं Right. तो उसको लीश से निकाल के रखती हूँ. एंड ऐसे नहीं है that I have given him some training. Right. I've never given him any training to be off leash. I just Right. understand that Mm-hmm. I cannot keep him on leash all the time because we pull Right. them and Mm-hmm. उनका neck बार-बार खींच रहा है and खींच रहा we है. are enjoying that because we are like, oh, उनको हाँ discipline में रखना है, so we keep pulling. Right. So I mean, I try to be a little sensitive with my dog. Of course, जहाँ पे Right. जरूरत पड़ती है, I do pull because Yeah. थोड़ा जरूरत तो पड़ता ही है. If he is running behind a cat, वो cat के पीछे बहुत भागता है. So whenever he is running behind a cat, he starts Yes. running and then he'll go anywhere. So that's the time I have to really stop him a little bit. Right. So that is a very important need, I think, social need. Right. Then, of course, need for love from Yes. their humans. Mm-hmm. See, guys, we have to understand that as humans, हम उन्हें ले तो आते हैं और Right. फिर हम बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है उनके लिए. Right. फिर हम बोलते हैं मेरा काम बहुत इम्पोर्टेंट है. Right. मैं बोलती हूँ मेरे को घर पे बहुत सारा काम है, मुझे कुकिंग करनी है, मुझे ये भी देखना है, वो भी देखना है. आई डोंट हैव टाइम फॉर माय डॉग एंड देन आई Right. जस्ट probably hire a dog walker. Yes. I will hire a maid. Mm-hmm. Okay, please do hire if you don't have time and if you have money to invest on dog walkers and maid and cooks for them. Please do that, but that should not stop you to spend time with your family member because a Right. dog is a pet is your family member, right? Right. So if you are getting a pet, you have to make sure that if you have time for them, only then get a pet at home. अगर आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है, Right. तो आप उनके लिए आप उनको घर पे मत लाइए. क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था, then Right. thousands of people brought pets at home because they were getting bored. Right. They wanted some movie, some entertainment because they were feeling lonely suddenly. Right. And जैसे जैसे उनका लॉकडाउन खत्म होते गया, उनका काम बढ़ते गया, Yes. वैसे वैसे they started either ignoring the pets or Yes. just simply abandoning the pets, which was very Yes. disheartening. यस. ऑल्सो आपने एक बहुत अच्छा So पॉइंट इंट्रोड्यूस किया है कि लोगों का ये मिथ था कि हमें डॉग से कोविड होता है और साथ ही साथ उनका ये भी है कि वो क्योंकि ऑफिसेज उनके वर्क फ्रॉम होम हो गए थे तो पीपल पेट पेरेंट्स वर नॉट हैविंग टाइम टू बेसिकली इन्वेस्ट देयर टाइम on their pets, so they started basically hiring a maid or something so that these maids can take them out or venture out to for walks. But that is not the only solution. So मैंने ये भी सुना था डॉक्टर से कि अगर आप एक पेट को ले आते हो कि मुझे सिर्फ मेरा अकेलापन दूर करना है इसलिए, लेकिन अगर आप उस पेट के साथ नहीं रहते तो वो पेट को भी कहीं ना कहीं लोनलीनेस होता है, उससे वो बीमार भी पड़ सकता है एंड ही कैन डाई ऑल्सो. सो इज दिस पॉइंट yeah, a legitimate one if you can guide us here? yes, absolutely, Yash. So Yes. basically, uh, we feel that if we get a pet, the pet will remove or help me with my loneliness, and I will Right. get a companion and a friend. Right. तो पेट भी वही सोचता है कि ह्यूमन Right. मुझे लेके आ रहा है, इवन आई विल गेट अ कंपेनियन एंड अ फ्रेंड, Right. राइट? बट ऐसा होता नहीं है. ऐसा हो जाता है कि हम ह्यूमंस के पास तो बहुत सारी चीजें करने के लिए, स्पेशली आर करियर एंड प्रोफेशन Right. एंड घर का काम एंड दिस एंड दैट, सो वी गेट बिजी विद दैट एंड Right. ultimately our start getting bored. So one more solution for this could be you get a friend for your dog, probably by getting another pet at Okay. home, right? Mhm. So gender doesn't matter. You can get a female, you can get a male, or whatever suits you, whatever you want to. Right. So अगर आपके पास एक मेल है तो आप फीमेल ला सकते हैं या एक मेल भी ला सकते हैं. Totally Right. depends on your pet, how comfortable will he be. Right. So मैं हमेशा as a communicator ये भी बोलती हूँ that if you're getting another pet at home, please ask your first pet first Right. if he wants to have another pet or not, Right. through communication,
राइट? कई बार हम अज्यूम कर लेते हैं दैट मे बी उसे एक फ्रेंड चाहिए, बट एक्चुअली नहीं चाहिए होता, उसे हम चाहिए होते हैं. राइट. So it is always better to ask them through communicate, either through a communicator, or if you know how to communicate, you can ask them. Right. If they are okay with having another pet at home, then only get another pet. So Okay. अगर वो ना बोलता है, then I think you only have to be his friend and Okay. companion and partner and everything. You have to spend time with him. क्योंकि Right. आपकी जगह कोई भी डॉग वॉकर या कोई भी कुक या मेड आपकी जगह नहीं ले सकता. Right. वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बट दिल Right. से द काइंड ऑफ लव दैट योर पेट नीड्स, दैट कैन नॉट बी गिवन बाय अ डॉग वॉकर और अ मेड. दैट ओनली यू Okay. कैन गिव. Right. So that is the Yes. thing which I wanted to convey. And there's another need that pets have, and that's the need of playing with them. Okay. Okay. So Yes. pets or your dog doesn't only, or even for that matter, cats don't only need, I mean, dogs especially, they need walking, but they don't only need walking, they need somebody to actually play with them. So there are a lot Right. of toys available in the market. Yes. There are a lot of games like fetch and tug of war and hiding the treats at your place, and let your pets find the treats by Right. sniffing. Right. Even hide and seek, I play hide and seek with my dog, and Right. I just hide myself, and then I make some noises, I make some Right. sounds, whistle sounds, Mm-hmm. and then he will come and find me. Right. You have to make sure that you make every day very playful and interesting for your pets. Don't make it boring. Right. वही चीज रोज रोज रोज, even they get bored, यार. They need Right. something. They love surprises, by the way. Right. Pets love surprises. Right. Okay. So इसीलिए whenever my husband comes back from work in the evening, Yes. that's the reason he's so playful and he gets very excited. But whenever Right. my husband is at home, he's not that playful. क्योंकि वो Right. घर पे जब आते हैं मेरे हस्बैंड, तो वो सरप्राइज मिलता है, and then Right. he's very excited. Yes. So पेट नीड्स, ये छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बता Yes. रही हूँ यश, ये बहुत Yes. इंपॉर्टेंट है कि उन्हें सरप्राइज पसंद है, उन्हें हाइड एंड सीक पसंद है, उन्हें स्निफ करना बहुत पसंद है. Right. सो इवन एट होम, लाइक मॉनसून के सीजन में वी आर नॉट एबल टू टेक देम डाउन सो मच, Right. राइट, फॉर वॉक्स एंड ऑल. So during monsoons, what we do is at home, we play these indoor games. Okay. with our pet Clumsy, and वो indoor games पे भी उसको अपना ही मजा आता है, जैसे street Right. छुपा दी and all of that. Right. So he really enjoys that. So that is another Right. need that they have, which really have Great. to take care of. ग्रेट. सो आपने बहुत सारे कुछ तरीके बताए जिससे जो पेट पेरेंट्स यूज कर सकते हैं अपने पेट को एंगेज रखने के लिए. सो मैं अब जानना चाहूंगा कि आपने शुरुआत में बोला था कि आप इतना एक्विंटेड नहीं थे पेट से, बट आज आप एकदम आप मतलब एक केमिस्ट्री दिख रहा है आपका और आपके पेट से. सो अगर फॉर एग्जांपल मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मुझे पेट अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं है कि मुझे मेरे पेट को कैसे रखना है, या फिर अगर वो सुसु कर देगा, पॉटी कर देगा, मुझे कैसे रिएक्ट करना है. सो हाउ टू गेट एक्विंटेड विथ हिज हैबिट्स. Right. I would say that before you get a pet, you need to do a lot of research about it. Okay. Okay, you need to read and am I audible? Yeah, you are audible. One second. I think my Bluetooth Yeah. is disconnected. Yes. But voice is clear, right? Yeah, voice is clear. I am able to hear you. Okay. Yes. Okay. So you have to do a lot of research Okay. on how to handle your pets. You can read about it. You can videos on it, and you can also connect with animal communicators or animal trainers, animal behaviorists. बहुत सारे होते हैं. Even you can connect with vets. Okay. With vets as well. Vets से connect करिए. आप जिसके पास आप, like in my case, I have a friend जिसके पास वो सेम ब्रीड है जो ब्रीड हमारी है, which is a beagle. Right. So we used to call our friend every day and ask her कि अच्छा अभी हम क्या करें, अभी हम क्या करें, अभी. So we actually took a lot of help from our friends. So I think that really worked. Right. Doing research is very important. तो सिर्फ आपको कौन सी ब्रीड चाहिए उसको रिसर्च करना जरूरी है, वो भी है, बट देन आप वो ब्रीड को हैंडल कर पाएंगे कि नहीं,
आपका घर छोटा है पर आप बड़ा ब्रीड right, ला रहे हैं, आप ये right, देखिए कि आपका वो बड़ा ब्रीड आपके छोटे घर में रह भी पाएगा कि नहीं, right. यू नो। सो आपको रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई वुड Okay, सजेस्ट वेरी स्ट्रांगली everybody out there, there are animal communicators, animal behaviorists, dog trainers, there are vets available, there is internet. Please do a right, thorough research before you get a pet at home. right. So you have told about having a research on the breed. So कौन से फैक्टर्स पे एक पेट पेरेंट को डिसाइड करना चाहिए कि ये ब्रीड लानी चाहिए या वो हमें कोई दूसरी ब्रीड लानी चाहिए? Right. One second, Yash. I या think my Bluetooth got disconnected. यस Okay. All right. Now this is a very interesting question, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे भी पूछते रहते हैं कि कौन सी ब्रीड लेनी चाहिए, कौन सा अच्छा रहेगा, कौन से ज्यादा क्यूट होते हैं, कौन सी राइट ब्रीड ज्यादा अग्रेसिव नहीं होती है। सो लोगों के बहुत सारे ऑलरेडी परसेप्शंस बने हुए हैं फॉर एवरी राइट ब्रीड, ओके राइट। सो फील दैट सबसे पहला परसेप्शन मैं बताती हूँ, एंड इट्स नॉट अ परसेप्शन, इट्स अ मिसकंसेप्शन ओके टूवर्ड्स indie breed, which is our ओके strays. ओके Okay, people feel indie breeds are most aggressive breeds, ओके and उसको तो शो ऑफ भी नहीं कर पाएंगे ना सोशल मीडिया पे, क्योंकि लोगों को लगता है अरे स्ट्रे को घर पे लेकर आएंगे तो शो ऑफ कैसे करेंगे, राइट पिक्चर्स में क्या दिखाएंगे, है, राइट यू नो। So that is the first misconception that people have, that नहीं इंडी को घर पे नहीं लाना because राइट they are really aggressive. राइट I would suggest, no, not a suggest, I would like to tell everybody out, राइट please get or adopt an indie breed. That should be your राइट first preference. राइट I had knowledge back then when I had adopted Clumsy. राइट Okay, तभी मुझे knowledge नहीं था about dogs and animals. If ओके I had knowledge, then I would have definitely adopted an indie. लेकिन ओके Clumsy को भी हमने किसी breeder से buy नहीं किया है. We अच्छा have adopted it. अच्छा I always believe in adoption. Please adopt राइट dogs, please adopt cats. Do not buy, because there are lot of dogs and cats who have no home, who are in राइट shelters, who are on the roads, who have abandoned. तो मेरा तो आपको यही बोलना है कि आप राइट पेडिग्री ब्रीड्स को प्लीज इतना इम्पोर्टेंस ना देके आप राइट पहले अपने इंडियन ब्रीड्स को, अपने जो स्ट्रेज हैं हमारे, राइट उनको इम्पोर्टेंट। छोटे छोटे पपीज पैदा होते ही मर जाते हैं रोड्स पे, राइट राइट। इतने सारे पपीज हैं अबैंडेंड है बेचारे, सड़क के, आई मीन गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, राइट 2 महीने के 3 पपीज, दे डाई। राइट सो अगर आपको एक पॉमेरियन और एक शित्जू इतना क्यूट लग रहा है, तो आपको एक इंडी ब्रीड क्यों नहीं क्यूट लग रहा है, राइट राइट। तो आप उनको रोड से उठा के अपने घर पे लाएं और उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे, आप उनको एक अच्छा लाइफ दे। राइट सो मैं तो यही बिलीव करती हूँ कि प्लीज अडॉप्ट एन इंडी, और अगर आपको एक ब्रीड चाहिए स्पेसिफिकली, सो प्लीज गो फॉर अडॉप्शन, ओके डू नॉट बाय, ओनली गो फॉर अडॉप्शन। अडॉप्शन के लिए बहुत सारे एनजीओ हैं, एनिमल शेल्टर्स हैं, वहां पे ओके आपको ब्रीड वाले भी मिलेंगे, एंड आपको वहां पे अलग अलग एज के डॉग्स मिलेंगे। सो ओके डू नॉट ओनली फॉर दोज डॉग्स जो छोटे छोटे पपीज हैं, जस्ट बॉर्न हैं। राइट राइट There are so many abandoned dogs who are actually 2 years old, 3 years old, 5 years old, even 8 years old. उनको हम राइट senior dogs बोलते हैं। राइट उनको भी open के साथ adopt करें। राइट I think that will be the most beautiful thing any human being can do. That's my yes. suggestion. You have given a very, I would say that a wonderful suggestion to all the viewers who are watching this. And can before putting the next question, क्या आप हमें कुछ लाइव दिखा सकते हैं अपने पेट क्लमजी के साथ कि आप कैसे एक मतलब कम्युनिकेट करते हैं, या फिर जैसे अभी आपको उनको उसको बुलाना है, तो आप कैसे बुलाओगे? लाइक Okay. राइट 1 second. राइट 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 You I can will just show off, you. yeah, you can just off the video as well if you want. Clumsy, come here. Clumsy, come beta. Come sit here. Sit. Come sit. So I actually have to show him the treat. Okay. Otherwise, he will Yes. not. Clumsy, handshake. Go handshake first. Handshake. Go handshake. Right. High Right. five. Kitchy, kitchy, kitchy. Right. Yes.
Yes. You won't believe, Yash, but me and my husband, we never hired a dog trainer for him. Okay. Okay. Trained him on our own by Okay. watching YouTube videos, because Hmm. the kind of bond that you can create with your pet when you Right. train him on your own, different bond. But Yes. when you get a dog, I'm not saying a dog trainer is not good idea. Of Right. course, it's a very good, Hmm. especially when Yes. you're very busy and you don't. But we had time, and we Right. wanted to create bond when he was 3 months old, when we got him home, when we adopted Right. him. Right. So we trained him on our own. These small, Yes. small things like Hmm. sit and Right. Right. handshake, that, right? No, no, Right. clumsy sit. One Right. second. Right. Right. No worries. No worries. 1 second, I'll show Hmm. you. Yes. Clumsy, handshake. Right. कितना Clumsy, high अच्छे से five. No, high five. Clumsy, राइट high five. High राइट five. ये So we always believed in training him on his own, राइट and time of training that we got, we invested a lot of time on him. ओके That time of training, he formed our bond very strong, राइट very strong. So राइट that is the reason, Yash, I don't even have to train him. I tell him राइट something and he'll do it. He understands me and understand my husband. राइट From we have to heart connection. That's the kind of राइट bond we have created, and I think every pet parent should do that. We राइट should be able to spend as much time as possible with यस our pets. यस सो ही इज Create लुकिंग a सो very या ही इज लुकिंग सो क्यूट दैट मेरी आंखें उससे जा ही नहीं रही है एंड द वे यू हैव ट्रेन्ड हिम जो मेहनत आपने की है वो दिख रहा है अभी भी जैसे आप बात कर रहे हो सो ही इज क्वाइट ही इज लिसनिंग उन्हें उसको पता है कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो आपने एक डायरेक्शन दिया है बिकॉज ही हैज यू हैव बेसिकली नर्चर्ड हिम फ्रॉम हिज बर्थ मतलब बचपन से ही आपने उसे नर्चर किया जैसे एक बच्चे को हम करते हैं इसलिए अभी उसे पता है कि आप जो बोलोगे वो वही फॉलो करेगा absolutely. See, people feel यस yes, feel that हम सिर्फ ट्रेनिंग देके ही अपने राइट पेट्स को सिखा सकते हैं, राइट बट दैट इज अगेन, हम प्यार राइट से, हम राइट बहुत सारा प्यार जब है और हम जब राइट उनके साथ टाइम बिताते हैं और राइट जब हम उनके साथ बैठ के ना बातें करते हैं, लाइक राइट अगर मैं बोलूंगी क्लमजी हाय, राइट he will actually understand and respond. Okay, यस respond as in you can hear him, of course, because through यस telepathic. But यस I think every pet understand their राइट dogs because everybody has a heart-to-heart connection. राइट So राइट I mean, the last thing that I want to tell you, Yash, is I think time is very important. राइट Time, time is very important. To we all need to spend a lot of time with our to Yes, understand them. yeah, yeah. So Abhi, I think that he is grasping the conversation because I think Yeah, that yeah, he's they have a very strong presence of mind. They like इतना they are having a very strong presence of mind and आपने बहुत अच्छे से ये communicate करके दिखाया. So just wanted to ask कि अगर किसी को ये abilities नहीं आ रही है या वो initially थोड़ा nervous हो रहा है वो कैसे ये communication अपने pet के साथ develop कर सकता है through telepathy आपने जैसे बोला. So can you guide them to all the pet parents who are watching this? absolutely. Yeah, So अगर कोई भी पेरेंट को कोई भी तरीके की right. डिफिकल्टी हो रही है टू कम्युनिकेट विद देयर पेट्स, देयर आर एनिमल कम्युनिकेटर्स अवेलेबल. आई एम वन Mhm. ऑफ देम, Right, एंड मेरी तरह बहुत सारे कम्युनिकेटर्स हैं. वी हैव द right, एंटायर कम्युनिटी कम्युनिकेटर्स. right, सो हम ऐसी चीज नहीं करते हैं जो मैजिक है. वी right. कम्युनिकेट विद एनिमल something called telepathy. Now Okay, telepathy is not heart to heart connection or a mind to mind connection with an animal, right, right? When we are born, right. every human is actually born with this ability. Mhm. Every human, okay? But हम ये क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, we Yes, actually start learning a language. Okay, yes, we start learning a language, verbal language, English, Hindi, whatever right, language. So वहां पे क्या होता है? We forget that हमारे अंदर telepathic abilities भी थी. right. Now, for example,
if you think of your friend, Right. कोई भी आपका फ्रेंड या रिलेटिव जिसको आप मिस कर रहे हो, आप उसके बारे में जब सोचते हो, कभी कभी ऐसा भी होता है आपको वो फ्रेंड, सेम फ्रेंड का कॉल या मैसेज आ जाता है, Right. and you feel, oh my god, I was just thinking about you and Yes. I've been missing you. Yes. And people, it's a coincidence. It's not a coincidence. It's your telepathic message that you're sending to your friend that I am missing you. Okay. Okay. Yes. This is what happens. Sorry, one second. Yeah. 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 Sure. Yeah. What happens in telepathy? We all have that ability, Right. but with time we have forgotten that ability. Right. With time, we have stopped believing कि telepathy नाम की भी कोई चीज होती है. Okay. Right. But it exists. In fact, animals भी एक दूसरे से telepathy के through बात करते हैं. अच्छा. Right? Mind Right. to mind, heart to heart. Okay. Right. They also treat each other. They say hi to each other. They say bye Right. to each other through telepathy. Fact. Okay. Right. सो अगर कोई पेट पेरेंट नहीं समझ पा रहा अपने पेट के सर्टेन बिहेवियर्स को लेके, कभी कभी पेट्स खाना खाना बंद कर देते हैं सडनली, कभी कभी कुछ पेट्स अग्रेसिव हो जाते हैं, Right. और अगर उनको ये सर्टेन समझ नहीं आ रहे हैं, रीजन समझ नहीं आ रहे, दे कैन ऑलवेज कम टू एन कम्युनिकेटर. वी एज कम्युनिकेटर्स कनेक्ट विद देयर पेट्स थ्रू टेलीपैथी एंड वी कैन आस्क द कि क्यों ऐसा हो रहा है, Right. ऐसा आप खाना क्यों नहीं खाते हो, या आप ऐसे सर्टेन वे में बिहेव क्यों कर रहे हो, एंड Right. देयर कैन बी थाउजेंड्स रीजंस बिहाइंड दैट. Yes. ओके. Yes. तो देन उनसे बात करके देन वी कन्वे द मैसेज टू द पेट पेरेंट कि Right. ऐसा ऐसा उन्होंने, आपके पेट ने ऐसा ऐसा बोला है. सो वी एज कम्युनिकेटर्स वी ओनली एक्ट एज अ मीडिएटर between a pet and a human. Yes. We are only So, yeah. So there was one question from the viewer, Avinash, that you were telling about the pet community. So he has asked that is there any page for such community? So can you guide the viewers कि ऐसा कोई पेज है जो वो सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं? फिर दूसरा क्वेश्चन आयुषी का है. उन्होंने पूछा है कि क्या ये रिमोटली किया जा सकता है, मतलब जो पेट कम्युनिकेशन है. सो कैन यू आंसर दिस right. क्वेश्चन? Okay. या. So, yes, definitely. Telepathic communication can be done remotely. In fact, it is mostly done remotely, wherein Okay. a communicator only need a picture of the pet. जरूरी नहीं Right. है कि हमें वो पेट होने के लिए होना ही है उसके साथ Right. कम्युनिकेट करने के लिए. हमें सिर्फ एक फोटो की जरूरत होती है और आपके पेट के नाम की जरूरत होती है. अच्छा. That's all you need to communicate with your pet. Okay. So definitely can be done remotely. In fact, I have done communications wherein animal has been out of India. अच्छा. Okay, जहाँ मेरे पास सिर्फ उस एनिमल की फोटो थी and I communicated with the animal. So distance यहाँ पे मैटर नहीं करता. Right. And second question, well, to be honest, Yes. I don't know such page for now, but Okay. let me see. Let me find out. Sure. Let me find out. I don't know any such Sure. page of animal community now. Yeah, let me see. But there are a lot of Avinash. Which city are you in? If you can mention that, probably I can suggest you something. Mhm. So, if Avinash is watching, you can just mention the name of your state, and Swati is here to help you. Also, Ayushi has asked that can you tell us a story of your communication? उन्होंने Oh, पूछा है. a lot of time, but then, Right. well, I mean, there was a time when there was, so I had a neighbor. I had a neighbor who had got a new dog, Yeah. and the breed was. Sorry to interrupt you. Yeah. He has written that Andhra Pradesh, Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Avinash, I wouldn't know any such place or any such page, but let me get back to you on this for sure. I will find it out and I will get back to you on this, Avinash. Great. So, Avinash, if you are having any doubts with regards to maintaining your pet or something, you can reach out to Swati, and also you can you can connect with her over Instagram. You can just go on her account and you can ask if you have any questions. So, yeah, sorry to interrupt you. Right. Sorry. Yeah. So yes, I mean, she was my neighbor, and she had got a new dog. I think Okay. he was hardly 4 or 5 months old, and suddenly one day he had stopped eating completely. He stopped having water completely, Okay. and it already, I think it's been 2-3 days, Right. and that's when. So she obviously first tried to analyze herself that the reasons, what are the reasons. Then she connected
me because she knew that I could communicate. Right. When she connected with me, and I asked the dog that, what is happening? Why are Right. you not eating and having? The dog actually told me that there is something stuck in his stomach, in his अच्छा. intestine. Something, अच्छा. yeah. सो Okay. और वो डॉग ने मुझे बोला, प्लीज मेरे ह्यूमन को बोलो, मुझे मेरी पेरेंट को बोलो कि मेरे मेरे अंदर से ये जो स्टक हुई है कोई चीज, ये प्लीज निकालें, बिकॉज मैं अच्छा. बहुत तकलीफ में हूँ, अच्छा. बहुत. अच्छा. So then what happened, the human, the parent immediately took him to the doctor, to the vet. Okay. उसका Right. sonography हुआ, and there was actually something, a white thread kind of a thing stuck in his stomach. अच्छा. So जिसकी So. वजह से उसका उसका स्टमक में बहुत सारा गैस हो गया, and that gas अच्छा. couldn't come out. अच्छा. Yeah. Okay. So that's something which was, I think, then obviously the human consulted the vet and we got him admitted. उसको Okay. एडमिट किया गया हॉस्पिटल अच्छा. में, उसको मेडिसिन चढ़ा, उसको सलाइन चढ़ा, and अच्छा. finally he was absolutely fine. Then he again started eating, drinking water, he was jumping, he was playing. But जो वो 3-4 दिन थे जब वो नहीं खा रहा है, he became very aggressive. Like he actually started biting his own family members. Now imagine, अगर आप एक कम्युनिकेटर के पास नहीं जाते, आप ऐसे सोचते कि अरे ये तो अग्रेसिव हो रहा है, ये तो हमें काट रहा है, you would have Right. judged the dog. Yeah. जबकि एक्चुअली वो डॉग ज्यादा तकलीफ में था. Right. He really wanted help. So Right. that was one of my communication that I did. I think it's been almost more than a year now. एक साल के भी ऊपर हो गए इसको. लेकिन मुझे अभी तक याद है because I was really touched by this. Yes. That dog was very छोटू, very small, and I couldn't see him in such a lot of pain. Right. So My with story. yeah. So with this story, can you guide the viewers कि कौन से खाना है जो डॉग्स को आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई बार जो पेट पेरेंट्स है उनको ये अवेयरनेस ही नहीं होती. मैंने ऐसे भी पेट पेरेंट्स को देखा है जो बोलते हैं अगर हम भिंडी और रोटी खा रहे हैं तो हम भिंडी और रोटी उसको खिला देंगे, या अगर हम दाल चावल खा रहे हैं तो वो भी दाल चावल खा लेगा. Right. See, तो ये बताने से पहले तो मैं ये बता देना चाहती हूँ to all my viewers and all my friends Right. who are watching this, कि मैं कोई सर्टिफाइड न्यूट्रिशियस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक सजेशन दे रही हूँ ओनली एज अ Right. पेट पेरेंट. एंड ऑल्सो मैं बताना चाहती हूँ कि अपने अपने घर का सबका एक तरीका होता है अपने पेट्स को रखने का इन टर्म्स ऑफ फूड. Right. यू नो, जैसे मेरे डॉग जो क्लमजी है उसकी बेस्ट फ्रेंड है विनी. नाउ विनी अच्छा. के पेरेंट्स उसे सब कुछ देते हैं, बड़ा अच्छा. पाव, दाल चावल, and she's absolutely healthy. She's अच्छा. absolutely healthy, fit, fine, okay? Right. And कोई इशू नहीं है. So that is why I would say कि आपने जैसे बचपन से उनको रखा है. Of course, Right. there are certain things, sugar and salt, which you should never give to your pet. Sugar and अच्छा. salt, especially sugar, is a poison to your pet. Okay. Sugar or chocolate is a poison to your Okay. pet. तो आप ये सारी चीजें शुगर और सॉल्ट के अलावा आप उनको सादा कुछ भी दे दो चलेगा, बट अच्छा. मुझे ऐसा लगता है कि आप बचपन से उनको जो भी खिला रहे हो उनको आदत पड़ जाती है. अच्छा. लेकिन जो ब्रीड होती है लाइक पेडिग्री ब्रीड्स, थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए उनके साथ, क्योंकि पेडिग्री ब्रीड्स बाहर की ब्रीड्स होती है, फॉरेन Right. ब्रीड्स, Okay. जैसे जर्मन शेफर्ड, गोल्डन Yes. रिट्रीवर, लैब्राडोर, Yes. फॉरेन ब्रीड्स. Right. तो अगर हम यहाँ इंडिया का खाना खिला रहे हैं, दाल चावल वगैरह, तो कभी कभी उनका स्टमक सूट नहीं होता, स्टमक अपसेट हो जाता है, लूज मोशन हो Right. जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उनका स्टमक ब्लोट करने लगता है, गैस हो जाती है. Right. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. अगर हम एक इंडी को अडॉप्ट कर रहे हैं, यानी एक स्ट्रे को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको तो Right. हम कुछ भी खिला के वो ठीक ही रहेगा, बिकॉज उसको Right. आदत है बचपन से, आदत. क्योंकि वो इंडिया. सो Right. ऐसा, बट व्हेन इट कम्स टू द टाइप ऑफ फूड, आई थिंक शुगर एंड सॉल्ट से बिल्कुल दूर रखना चाहिए. Right. सेकंड, रेजिन्स नहीं देने चाहिए, यानी किशमिश. किशमिश. रेजिन्स अ पॉइजन. यस, रेजिन इज अ Okay. पॉइजन फॉर योर पेट. ग्रेप्स नहीं देने चाहिए, ग्रेप इज अगेन पॉइजन टू योर पेट्स. Right. एंड Right. any type of dark chocolate, any type of chocolate, you should Right. never ever give your pets. Right. That's my suggestion. What I give to Clumsy is I give him boiled vegetable. I give him boiled chicken because he's a non-vegetarian, so boiled Right. chicken, and very little rice mixed with haldi. So we Okay. make homemade food.
every alternate day we cook for him Right. ourselves, and we also give him dry dog food. तो एक टाइम हम उसे ड्राई डॉग फूड देते, एक टाइम हम उसे घर का खाना देते, Right. एंड थोड़े से हम स्ट्रिक्ट है इस मामले में, क्योंकि Right. ही इज अ बीगल और उसको जल्दी वेट पुट ऑन हो जाता है, तो हम हाँ. उसे जंक फूड बिल्कुल नहीं देते. ही लव्स जंक फूड, ही लव्स ब्रेड बटर, ही लव्स रोटी चपाती, Right. पर तो प्रेफर नॉट टू गिव. Yes. सो इट Yes. टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू ब्रिंग देम अप. आप उनको कैसे बड़ा कर रहे हो, टोटली आप. बहुत सारे डॉग्स को सूट हो भी जाता है, तो जो आपके Right. डॉग को सूट हो रहा है, बट ऑफ कोर्स टेक एन एडवाइस फ्रॉम योर वेट फर्स्ट. डॉक्टर से Right. एडवाइस लेकर ही आप उनको स्टार्ट करें. Right. Also, yesterday I was having a conversation with one of the founders of the pet food, and basically also she is providing vet consultations. So she said that onion is also harmful. So क्या ऐसा है कि जो onion होता है that is harmful? या अनियन इज वेरी हार्मफुल. तो उनका जब Okay. हम लोग खाना बनाते हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो हम अपने खाने में अदरक लहसुन प्याज Right. टमाटर ये सब डालते हैं, उनके खाने में बिल्कुल नहीं डालें. अनियन इज अच्छा. वेरी हार्मफुल फॉर देम. एंड what I do is I prefer giving my dog, मैं उसको ना रोज रोज थोड़ा अलग अलग फ्लेवर ट्राई करती हूँ ताकि वो बोर Okay. नहीं हो. Okay. You can give mint like pudina. You Pudina. can put a little dhania. You can put any type of herb. For example, Right. parsley, basil, rosemary. There are a lot of herbs. So even though Right. you're giving them boiled vegetables mixed with a little bit of rice and boiled chicken, अगर आप चाहते हो कि वो बोर ना हो रोज एक ही खाना खा करके, तो आप उनके खाने में अलग अलग टाइप के हर्ब्स डाल सकते हैं, जो अच्छा. मैंने अभी आपको बताया. Right. Just to make it flavorful, you know, because वो भी बेचारे बोर हो जाते हैं ना, every day Right. same food. Right. When I say vegetable भी आपको बहुत ध्यान रखना है. सारे Right. वेजिटेबल सूट नहीं होते, like carrot, pumpkin, beans, beetroot, these are still okay. Okay. So सारे वेजिटेबल सूट नहीं होते. So I would say just stick. Carrots तो सारे breeds को सूट होता है, even pumpkin. Like beetroot मेरे डॉग को सूट नहीं होता, बट बहुत सारे डॉग्स Right. को सूट होता है. Right. And beans also, I think every dog can eat beans. Yeah. So Right. that is some of the vegetables. Yeah. Right. And don't And forget to put haldi, because yeah. haldi is very effective. Yes. Yeah. Yes. एंड अगर कभी ऐसा होता है कि उनकी इच्छा कुछ बाहर का खाने की होती है, सो हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट ही इज क्रेविंग फॉर सम जंक फूड? See, dogs are very foodie. Yeah. उनका कभी मन नहीं भरेगा. Keep giving them, we keep eating. Okay. राइट. Luckily, dog never craves for बाहर का खाना. पता नहीं वो शुरू से बचपन से पता नहीं, I don't know how, but वो ऐसा ही है. वो कभी भी ना, जैसे अगर मैं खाना खा रही हूँ, वो मेरी प्लेट के पास कभी नहीं आएगा. Never ever he will clear my plate and even try to sniff my food. Never. He is very Right. happy with his. राइट. But हम लोग क्या करते हैं, वीक में एक बार थोड़ा चीट डे रखते हैं उसके लिए. अच्छा. Right. For example, we give him little bit of vanilla ice cream. Vanilla ice cream dogs can eat. No other ice cream you have to give them. Vanilla ice cream, little bit, it's okay. ओके. And sometimes we give him dahi, sada dahi, okay, ओके. curd. Sometimes we give him yogurt, strawberry Yeah. yogurt, strawberry yogurt. यस. तो Great. ये हम ना चीट उसके लिए रखते हैं. तो जब Great. उसका चीट डे होता है, हम ये सारी चीजें देते हैं जो हम उसको रोज रोज नहीं दे सकते, बिकॉज ऑब्वियसली ये भी नुकसान करते हैं बहुत. Right. बहुत ज्यादा. Right. यू गिव देम इट, तो इसके लिए उसका मन भी भर जाता है कि चलो एक बस. दिन मुझे मिलेगा. मिलेगा. एक्साइटेड. यस. Yeah. यस. So that. ग्रेट. एंड विथ रिगार्ड्स टू द ग्रूमिंग, सो कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हम खुद साबुन से नहाते हैं उसी साबुन से उसको भी नहला देते हैं. नहीं, बिकॉज अवेयरनेस नहीं होती है. सो अगर मैं लाइफ बॉय से नहा रहा हूँ तो वो भी लाइफ बॉय से उसको नहलाएंगे, पानी डाल देंगे. सो क्या एक सेट ऑफ प्रोसेस होता है पेट को ग्रूम करने का, नहलाने का? या ऑफ कोर्स. मतलब वैसे तो आजकल बहुत सारे ग्रूमर्स भी हैं अवेलेबल इन द मार्केट, लेकिन अगर आपको पेट को खुद नहलाना है, अगेन आई वुड से आप एक बार वेट से बात करो. आपके जो डॉक्टर है, के डॉग की डॉक्टर है, आप उनसे बात करके पहले पूछ लो कि कौन सा शैम्पू आपके पेट को सूट करेगा, क्योंकि हर डॉग के लिए अलग अलग शैम्पूज होते हैं उनके हेयर के अकॉर्डिंग, हेयर के ब्रीड के. हाँ. और अगर उनको कोई स्किन प्रॉब्लम है तो उसका शैम्पू अलग आएगा. अगर उनकी बॉडी में टिक्स एंड फ्लीज है, उसका शैम्पू अलग आएगा. अच्छा. सो आई वुड से योर वेट, और जो भी शैम्पू वो सजेस्ट कर रहे हैं, डॉग्स का ही शैम्पू लेके उनको नहलाएं, अपना शैम्पू से नहीं नहलाएं, क्योंकि हमारे शैम्पू में बहुत केमिकल्स
होते हैं, Right. गलती से टच भी नहीं करते। Right. एंड अगर आप टहला नहीं पा रहे ज्यादा, अगर आपके पास जेन्युइनली टाइम नहीं है, आई वुड सजेस्ट कि आप उनको एवरी डे इन द नाइट बिफोर दे स्लीप उनके जो पॉज होते हैं उसको आप प्लीज एक थोड़ा सा सेमी वेट कपड़े से प्लीज वाइप देम। Okay. इसलिए नहीं कि आपका बेड हो जाएगा, बल्कि इसलिए बिकॉज अगर उनके पॉज में गंदगी रहेगी तो उन्हें बहुत इचीनेस होगी और Right. वो बहुत तकलीफ में रहेगी। बिकॉज मैंने देखा है क्लमजी को कभी कभी मैं भूल जाती हूँ उसे क्लीन करना और वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है। सो Right. देन आई रिमेम्बर ओके आई हैव टू क्लीन हिज पॉज, क्योंकि वो इतना Right. चलते हैं, चल चल their paws become Right. very muddy. Muddy. So it's Yes. important for us cleaning their paws every day before they sleep. Right. राइट Yeah. एंड ऑल्सो अगर मैं हम अपने घर में रहते हैं सो कई लोग हैं जो उनके लिए डॉग हाउस लाते हैं सो ये क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है डॉग हाउस लाना एक छोटा सा घर या फिर बेसिकली जैसे हमारा कोई चाइल्ड होता है तो हम क्रेडल लाते हैं फॉर आवर टॉडलर्स सो डू दे Right. नीड एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ बेसिकली मटेरियल्स विच यू वुड एडवाइस कि वो होने ही चाहिए Right. So basically every dog needs his own space in the house. ओके Okay. जिसको वो बोले कि हाँ राइट ये मेरी खुद की स्पेस है, ये मेरी खुद की जगह है। ओके राइट तो हम हम भी क्लमजी के लिए बहुत कुछ लाए थे, बहुत कुछ लाए थे जो उसने सब फाड़ दिया। He tore अच्छा everything. तो ओके देन वी रियलाइज कि डॉग बेड से बेटर है कि उसको उसके लिए फिर मैं एक छोटा सा मैट्रेस लेकर आई। हाँ सो जी नाउ इवन दो ही स्लीप्स विद मी एंड माय हस्बैंड ऑन आवर बेड एंड राइट हमारे साथ ही कडल होता है हमें हक करके, बट दिन राइट के टाइम पे ड्यूरिंग he has his own mattress and ओके we also got him a small dog house. ओके Okay, there's a dog house. तो जब भी ना उसको अपनी स्पेस चाहिए होती है, क्योंकि उन्हें भी स्पेस चाहिए होती है राइट हर वक्त उनको, they don't like cuddling every राइट time, राइट you know. राइट Needs his space, उसे हमसे थोड़ा दूर जाना रहता है, so he will get into his dog house and sleep. राइट And he has his mattress यहीं पे रखी है, यहाँ पे पास में है, so राइट he will sit on his mattress, he will sleep, he will play on his mattress. So for a dog it is very important to have his own space in the house. राइट और वो अपनी स्पेस को ना बहुत अडोर करते हैं कि ये मेरी राइट जगह है, यू नो, इट्स वेरी, राइट क्योंकि हस्बैंड्स का बेड है जैसे हमें पता है कि ये मेरा बेड है, डॉग्स को भी राइट अपना एक स्पेस जरूरी है। राइट राइट So you have been very, I would say that very optimistically you have been guiding and very point to point, and it has been a wonderful session for me to cater you and basically to all the viewers who have been listening this and when we are going to upload this session as well. We were talking about mating during the call. You told me about that mating is an important aspect for a pet because we as an individual we are also attracted to the opposite sex. So उनके लिए भी जरूरी Absolutely. होता है कि वो एक फीमेल डॉग के साथ अट्रैक्ट हो सो मीटिंग का क्या होता है कैन यू टेल अस कि मीटिंग एक डॉग को मीट कैसे करवाया जाए या फिर कैसे वो नीड्स को फुलफिल किया जाए Absolutely. So राइट this is a very important question. This is a very important point जो हम मिस कर देते हैं कई बार। ओके हमारे जो होते हैं, चाहे वो डॉग हो या कैट हो, उनकी फिजिकल नीड्स भी होते हैं। जैसे ओके जैसे वो बड़े होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 साल के हुए, 1 साल के राइट बाद खासकर राइट उन्हें या तो आप न्यूटर करा दीजिए, न्यूटर, ओके लाइक पीपल हु आर पेट पेरेंट्स दे नो व्हाट इज न्यूटरिंग, ओके न्यूटरिंग और उसको ही बोलते हैं, यानी कि उनका ऑपरेशन करवाना, या तो आप ओके उनको न्यूटर करवा दीजिए ताकि ओके यू नो दे बी हैविंग दैट अर्ज टू मेट। ओके अगर आप न्यूटरिंग नहीं कराना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ का ऑपरेशन नहीं कराना, उसे राइट तकलीफ होगी, सो प्लीज राइट फाइंड देम। अगर आपके ओके पास एक फीमेल डॉग है, उसके पास एक मेल डॉग के साथ एक मीटिंग करा दे, मेल डॉग है तो राइट फीमेल के साथ एक मीटिंग करा दे। राइट लेकिन इट टोटली फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। ये राइट मैं नहीं कहूंगी कि न्यूटरिंग सही है या मैं बोलूंगी न्यूटरिंग नहीं कराना राइट सही है। राइट इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, क्योंकि राइट इसमें आधे लोग बोलते हैं न्यूटरिंग कराना चाहिए, आधे 50% ऑफ द पीपल डोंट बिलीव इन न्यूटरिंग। डोंट बिलीव मैं ये लोगों पे छोड़ती हूँ कि राइट आपको जैसे कराओ, लेकिन अगर आप न्यूटरिंग नहीं करा रहे हो तो प्लीज आप एक डॉक्टर से, एक वेट से सलाह ले और आप उनसे बात करके ये पता करें कि मुझे एक फीमेल है मेरे पास, तो मेल मुझे कैसे मिलेगा और मैं मीटिंग कैसे कराऊं। आई थिंक अ राइट वेट इज द बेस्ट पर्सन टू गेट यू राइट अ मेट, get you a mate, you know. So I ओके think that would be really good. अगर आप नहीं मेट करा रहे हैं उनको,
तो आप नहीं समझ रहे हैं कि उनके हॉर्मोन्स जो बन रहे हैं वो अंदर ही अंदर इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और फिर कितने पेट पेरेंट्स बोलते हैं मेरा डॉग तो अग्रेसिव है, मेरा ये अग्रेसिव हो रहा है, बाइट कर रहा है। दे डोंट अंडरस्टैंड दैट बाइटिंग के बहुत सारे रीजंस होते हैं। वो बाइट करते हैं क्योंकि ये भी उनको अंदर ही अंदर दे वांट टू मेट, उनके हॉर्मोन्स बनते हैं जैसे, राइट, उनके भी फिजिकल नीड्स। तो एक बहुत बड़ा नीड का होता है फिजिकल नीड, जहाँ पे अगर आपको नहीं चाहिए कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो या वो बाइट करे या वो हमेशा बेचारा दुखी बैठा रहे, सो ईदर यू फाइंड डॉग अ मेट और you please neuter him. That is the best solution. Great. So I think I have covered all the questions from my end, which basic amateur pet parent would like to cater. So do you like before winding this up, do you want to give any advice to all the pet parents out there after seeing the scenario of COVID, post-COVID, and the all the discussion which we are having during the course of this life? So is there anything that Swati would like to address as a communicator? Absolutely, Yash. I would suggest every pet parent and in fact every individual to respect all the animals. All the animals, whether it's a stray dog, stray cat, pet dog, pet cat, whether it's a cow or a donkey or a horse or any animal for that matter, please respect animals, please love them, because उन्हें हर वक्त सिर्फ खाने की जरूरत नहीं होती है, उन्हें प्यार भी चाहिए, उन्हें ध्यान चाहिए, उन्हें आपका अटेंशन चाहिए। हम सोचते हैं डॉगी को क्या चाहिए रहेगा, खाना ही तो चाहिए रहेगा। इट्स नॉट, इवन विद अ स्ट्रे डॉग, आप उसे खाना जब देने जाते हो ना, थोड़ा प्यार भी कर लो यार बैठ के। आपके थोड़े हाथ गंदे, घर आके वॉश कर लेना, व्हाट इज, क्या ये फर्क पड़ता है, राइट? सो इतना नहीं सोचना चाहिए। सेकंड, मैं एक टिप देना चाहूंगी टू ऑल द पेट पेरेंट्स जिन्हें लगता है उनके डॉग्स अग्रेसिव हैं। ओके, तो सारे पेट पेरेंट्स मेरे पास आते हैं ये बोल के कि स्वाति माय डॉग इज वेरी वेरी अग्रेसिव। अग्रेसिव उनके उनके नॉलेज के हिसाब से अग्रेसिव, एक्चुअली में वो अग्रेसिव नहीं होता, राइट? उन्हें ऐसा लगता है उनके पर्सपेक्टिव में। तो मैं उन सब पेट पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि पहले तो आप देखिए आप उनकी सारी नीड्स पूरी कर रहे हैं कि नहीं, सोशल नीड्स, उनको फिजिकल नीड्स, उनकी वॉकिंग नीड्स, उनके खाने के नीड्स और उनके हेल्थ की नीड्स। आप अगर ये 5 नीड्स पूरी कर रहे हैं तो वो कभी भी अग्रेसिव नहीं होगा। बट इफ यू आर मिसिंग ऑन वन नीड, देन डेफिनेटली भाई वो अपने को भी तो एक्सप्रेस करेगा ना, वो चुपचाप तो नहीं बैठा रहेगा, राइट? अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वो भी अग्रेशन दिखाएगा, वो भी आपको क्यों काटता है, क्योंकि आप उसकी बात ही नहीं समझ रहे हो, आप उसकी नीड नहीं समझ रहे हो। क्या करेगा बेचारा, he gets frustrated, you know. Right. So that is my suggestion to every pet parent. Please focus and observe on your pets, spend time with them and focus on all the 4-5 needs that we've just briefed right now. And if you're not fulfilling even one need, then your pet will have his own ways to tell you that my need is not getting fulfilled. और अगर आपको समझ नहीं आता, so please contact the animal communicator and we will talk to your pet. And we will tell you. So you have been really helpful for me for conducting this session, because I was really looking to onboard someone for this session, and I was able to basically approach you, and the overall process was very smooth and you were very helpful. So it is a like my personal observation which I have seen, the mentality which people are carrying कि कैसा हो गया है स्वाति कि जब हम आज के टाइम को अगर देखें अब 3-4 साल या 5 साल से, कि लोगों को लाइक मनी जो है उसको इतना ज्यादा हमने कहीं ना कहीं हाइप कर दिया है कि हमें लगता है कि अगर हमारे पास कोई चाइल्ड नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, सो पैसा एक ऐसी चीज है जिससे हम पेट खरीद लेंगे और उसके बाद पैसे से हम उसका फूड खरीद लेंगे। तो हर चीज आप आज के टाइम में, नॉट आई एम सेइंग एवरीवन इज डूइंग दैट, बट अराउंड 70 to 80% आर मनी माइंडेड। उनको लगता है कि कोई भी सोल्यूशन है वो पैसे से आ जाएगा, और जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होती है, जहाँ पे एक केमिस्ट्री बनाने की जरूरत होती है, वहां पे पीपल आर फेलिंग। दैट इज वाई इन पर्सनल फ्रंट, this is one of the reason, I am not telling that this is the sole reason, one of the reason with pets is also कि उनको भी एक कंपेनियन चाहिए होता है। उन्हें ये नहीं चाहिए कि बस मुझे आप घर पे ले आओ, मुझे खाना खिला दो, मुझे बाहर वॉक करने ले जाओ, मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। अगर आप वो अंदर से फील नहीं कर रहे उसको लाने के बाद कि यू आर हैप्पी व्हेन यू हैव अडॉप्टेड हिम, ही इज गोइंग टू फील दैट चेंज। लाइक उसको भी लगेगा कि यार मेरे को सिर्फ लाने के लिए ले आया है, बट अंदर से दे आर नॉट हैप्पी।
and he is going to Yeah. be in his shell. So मेरा बस एडवाइस यही है व्यूअर्स को कि मनी से ऊपर भी थोड़ा आप अपनी थिंकिंग रखिए, बिकॉज कैसा है कि आज की लाइफ में हम जॉब्स कर रहे हैं, हम बिजनेसेस चला रहे हैं, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि बस पैसा आ जाए, हमारी नीड्स पूरी हो जाए, खत्म. In relation fronts also, this is the case. So I just thought to basically resonate with the pet side of things. So my concluding question would be, yeah. So my concluding question is going to be pertaining to me. You have been seeing me for around 40 to 45 minutes as a host. As a host, I'm always open to suggestions कि क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाए जिससे ये सेशन तो और अच्छा हो ही, लेकिन आगे अगर किसी गेस्ट से किसी भी चीज को लेके कोलैबोरेशन होता है तो वो और रोबस्ट हो और सॉलिडिफाइंग हो. सो हैव यू फाउंड एनीथिंग व्हिच शुड बी इम्प्रूव्ड, और like how would you basically describe your experience? Yes. Yeah, I think we just need to reach out to more and more people even Okay. before we start any Okay. kind of Mhm. speaking initiative in life. That was one thing, that just the only feedback that I have, that we Right. need to reach out to more and more people just to make them aware that we are going to have this live, because Right. I think people might not be even aware that we will be having this live. So that's the only thing. I Okay. think uh, the more you reach out to more people to promote your lives, I think the more people will become aware by being a part of Right. the live. Right. It's the only thing. Right. Otherwise, I'm really very happy with this initiative. Thank you. So, like particularly, like we have just as basically, I'm seeking for answer कि हमने पोस्टर बनाया, वो हमने बेसिकली कोलैब किया, हमने स्टोरी डाली, उसके बाद लिंक्डइन पे भी मैंने डाला. सो एनी एडवाइस यू हैव कि वो लाइक कैसे और एंगेज कर सकते हैं ऑडियंस से? I think if we would have done it 2-3 days prior, Okay. it was 1 day prior that we started. If we would have Yes. done it 2-3 days, I Okay. think we would have little better result and more engagements in terms Okay. of people watching poster. Yeah, more Right. engagements. I 1 day prior was a little short notice. That's the Okay. only thing. Great, Yeah. great. So I will be mindful about this aspect and will definitely look into this, that I should give the required things on time. So thank you very much, Swati, and I hope that I am always looking forward for more such collaborations. So if anyone in my circle is looking for any guidance with regards to the pet, I will definitely connect him or her to you. सो थैंक यू वेरी मच. एंड मुझे पर्सनली बहुत नॉलेज आपने दिया है. अगर मुझे भी कभी फ्यूचर में पेट रखना होगा, मैं तो अभी ले आऊं, लेकिन मेरी मम्मी को थोड़ा शी स्केप्टिकल अबाउट दैट, सो उनको समझाना पड़ेगा. मैंने कई बार मजाक में बोला कि Yeah. मैं शेर ले आऊं, फिर ऐसा हो तो मैं लायन भी ला सकता हूँ आपके लिए. सो आई जस्ट या so thank you very much for your valuable time, and just wanted to tell that we need more and more people like you who are open to collaborate, who are open to put their views. I think as you are into soft skills as well, you are someone who is keen about this pet part. मुझे आपके प्रोफाइल से भी ये लगा कि इवन तो आप बाय प्रोफेशन आप सॉफ्ट स्किल्स हो, बट एनिमल कम्युनिकेटर भी हो, बट योर हार्ट लाइज इन एनिमल. बेसिकली your profession is soft skills, but your heart is in animals, and not just communication but in every aspect that can upgrade their life. Absolutely. Great. That's very true. That's very true. Yeah, my heart Yeah. is because when I discovered the world of animals, Right. I was mind blown. I could believe that there is a separate and such a wonderful world of animals that existed, and I was not aware about it for so many years. Right. But when I became a communicator and started talking to animals and started listening to their point of view, their opinion, their perspective, Right. For example, animals don't fear death at all. For Right. them, death is just like changing clothes. Okay. And just like this, there are thousands of other things as well, which I discovered after talking to them. So Great. I was mind blown. And from Great. that day, I wanted to get more into understanding animals and making people aware. Jitna ho Yes. sake, I want to make people aware. Great. So my last take would be that I can see the keenness and that excitement in your body language and in your eyes. So क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई पेट पेरेंट को अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है स्वाति जैसा, सो उन्हें एक कीननेस चाहिए होगी, उन्हें एक इंटरेस्ट चाहिए होगा, और उन्हें एक एक्साइटमेंट चाहिए होगी कि हाँ हम एक पेट को ला रहे हैं. एंड आपने बहुत सही बोला कि
apart from like you should not purchase a pet, but instead you can basically adopt them from, or there are organizations, और also आप उन्हें किसी भी स्ट्रीट का एक पेट है उसको आप लाके अडॉप्ट कर सकते हैं. So Yeah. yeah, thank you very much, Swati, and we are done with this session. And just wanted to tell viewers that if you are having any questions, you can reach out to Swati regarding the pets, and she's going to guide you. Thank you very much, Swati, and looking forward for more such collaboration. Thank you. Thank you, Yash. Thank you for having me. Thank you everyone for watching this. Yeah, Bye. thank you, Swati. Yeah, bye. Bye.